150 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका है, जो कि उसका निर्धारित कक्षा है और कोस्ट फेज प्रारंभ है। जी हाँ, and it's traveling at 7.3 kilometers per second at an altitude of 453 kilometers right now. So coming back to the regenerative cooling point of things, the tiny tubes around the thrust chamber of the engine essentially have fuel pumped through it. S4 thrust cut off. And we've got confirmation that we have cutoff of the Raman 2 engine, which means Solaris that, satellite separate. and we have separation of the Scope Solaris satellite separate. satellite and the Scope satellite. Vikram Both satellites Agaman have mission been deployed accomplished successfully, Handing over to mission and we director. have reached space on our first जी attempt हाँ, successfully. इतिहास में पहली बार एक यान ने अपने प्रथम परीक्षण उड़ान में ही उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। And now comes something very, very interesting. You can see on your screen from on board the cosmic bloom and the micro art. And we have sun rising behind it. It is the dawn of a new space era. ये एक नए अंतरिक्ष युग का प्रारंभ है। सूर्य के किरण ने ये प्रकाशित कर दिया है। Skyroot has actually completely redefined orbital flights, I guess, forever. यस, अवश्य, ये कथन बिल्कुल Plus सही है। 17 minutes. So right now we are awaiting Hello everybody. the Cosmoser Today we have satellite created history. to Vikram perform. 1 Agaman mission is a grand success. And we've heard call out from the mission director that the Agaman mission is a grand success. सफलतापूर्वक प्रथम मिशन आगमन ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित कर दिया है। Hello space, we have arrived. Thank you for joining us today. Thank you for being with us on this historic journey today. With Raman 2 and Vikram 1 now safely in orbit, we are not just reaching space, we are opening space for all. आज की इस ऐतिहासिक उड़ान में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। विक्रम 1 ने सफलतापूर्वक सारे उपग्रहों को कक्षा में पहुंचा दिया है और भारत के अंतरिक्ष सफर में एक नया उज्जवल अध्याय खोल दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Good afternoon. Good afternoon, everyone. We'll let them celebrate. Good afternoon. I am privileged to formally announce that the first ever Indian private sector launch has been successfully completed. Not only did Vikram 1 meet its mission objective, which was simply to clear the tower. It went all the way up to 453 kilometer orbit, successfully completed all the tasks, and something that is way beyond expectation for the very first orbital launch ever taken by an Indian private company. There is not much more that I want to say on this occasion. I would like to invite Pawan and Bharat to talk about their journey and how they feel today, this momentous milestone that Indian private sector space initiatives have had. And I would like to thank everyone involved in this, of course the Skyroot team.
The Skyroot team has worked day and night to make this day happen, ably supported by the team from SAR, from Extended ISRO, and from InSpace. So thank you everyone for giving India this proud moment. Thank you. हाँ जी, आ रही है। हाँ, आ रही है। जी सर, मैं पीएम साहब को लाइन दे रहा हूँ, आप लाइन पर हैं। हेलो हेलो सर। हेलो, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? हेलो वी आर पवन एंड भरत फ्रॉम स्काईरूट। कौन बोल रहे हैं? सर वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज टू हियर यू। फर्स्ट योर वॉइस आफ्टर द सक्सेस। पवन, भारत और पूरी टीम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने